प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी, जिसमें हमने देखा कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो ये अगर इस तरह से भी ऐड किए जाते हैं तो ऐसी कंडीशंस में इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है इन एडिशन की केस में कि यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब कहने का कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए आई जे यम क्रॉस एन है, तो दूसरी मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर कुछ इसी तरह होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो ये मैट्रिक्स ऐड नहीं किए जा सकते। अब पिछली कंडीशन में या पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी यानी ए और बी, चाहे ए में बी को जोड़े चाहे बी में ए को जोड़े, हमें यहाँ पर सेम वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा कम्यूटेटिव लॉ के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होने को मिलता है। मतलब अगर कहने की कंडीशन है ए बी और सी अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो इनको हम किसी भी कंडीशंस पे ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, यह कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। क्या मैट्रिक्स इज आल्सो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इसके बाद बात आती है आइडेंटिटी की केस में। तो कहता है ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर अगर यम क्रॉस एन है, ओ एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी यम क्रॉस एन के बराबर है, तो ए में अगर ओ को जोड़ें चाहे ओ नल मैट्रिक्स में ए को जोड़ें, हमें हर हाल में यही मिलता है। ये आइडेंटिटी को भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे बनती है कि हमें मैट्रिक्स की केस में ये कंडीशन मिलती है कि मैट्रिक्स जो है अगर एडिशन केस में आ रही है तो ऐसी कंडीशंस में हमको मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी कंडीशंस को एग्जिस्ट करने की केस पे मिलता है। अब बात आती है कहीं अब इसके आधार पे इनके बेस हम क्वेश्चन कुछ देखेंगे। जैसे हमें वेरिफिकेशन मान लीजिए इसका करना है। कहता है ए एक मैट्रिक्स है 2 3 5 -1 0 4 और बी दूसरी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 4 -2 3 एंड 2 6 -1। कहता है वेरीफाई दैट दीज मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो देखिए, these matrices have commutative law following condition means that a plus b is equal to b plus a. Firstly, we see that these matrices are getting added or not. So for adding condition we have also know that both order are same. So its order is, it have 2 row and 3 column. It also 2 row and 3 column. So its order are same, 2:3, 2 into 3. So firstly we obtain a plus b is equal to 2 plus 4 6, 3 minus 2 1 and 5 plus 3 8, minus 1 plus 2 1, 0 plus 6 6, 4 minus 1 3. This is the order of a plus b, and we also obtain b plus a is equal to 4 2 6 minus 2 3 1 3 5 8 2 minus 1 1 0 6 6 and 4 minus 1 3. Both have same value. In this case we see that both have same value, so a plus b is equal to b plus a. This is the verified way. Just like this we have also verified that a plus b plus c is equal to a plus b plus c, means that associative law. Associative law, suppose that there is 3 matrices a, b and c. This is a is equal to 1 5 3 and -2 4 0. b is equal to 3 0 5 and 1 2 3.
and C is equal to 4 minus 2 1 and 3 2 0. So in this case, in the both matrix have, firstly we see that the both matrix orders are same. For addition condition, we have firstly identified that or analyze that the both matrices orders are same. So firstly see that here is 3 row and 2 column, then 3 raised 2, it is also 3 raised 2, it is also 3 into 2. The both order is same, so we getting added. Firstly, this case A plus B plus C is equal to A. The value of A 1 5 3 minus 2 4 0 in plus. Both are getting added in same condition. This is both are getting combined condition. 3 4 7 1 3 4 0 minus 2 2 2 4 5 1 6 3 0 3, and both are getting added to each other. Then we have obtained 1 7 8 minus 2 4 4 sorry minus 2 4 2 5 minus 2 3 4 4 8 3 6 9 and 3 0 3. Again we have take A plus B in one bracket and C in existence. Firstly A is added to B, then we have obtained 1 3 4 minus 2 1 1 minus 1 and 5 0 5 4 2 6 3 5 8 and 3 0 3 plus value of C is put here minus 2 1 3 2 0. Both are getting added with each other. We have obtained 4 4 8 5 minus 2 3 8 1 9 and minus 1 3 2 6 2 8 and 3 0 3. In this case this value and this value are equal, so we say that A plus B plus C is also equals to A plus B plus C. So in this case we see that the addition of matrices are associative, follow the associative law. Just like this, addition of matrix is also following the identity law or the identity matrix, and we have also seen in some examples additive inverse of matrix, but this is see in next video additive inverse. Firstly we see that the associative and commutative law of the matrices, and on the basis of these properties we have seen some questions of the exercise. In this case one question is here, find in simplified way cos theta in bracket cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta minus cos theta and sin theta. We have simplified to this question. So we simplified. Firstly cos theta is getting multiplied. In case of any number, any element is to be multiplied in the given matrix, then all elements will be multiplied by this. So cos theta should be multiplied by both. So it's written as cos square theta sin theta into cos theta minus sin theta cos theta and cos square theta. In another bracket sin theta should be multiplied by all elements. It's written as sin square theta minus cos theta sin theta cos theta sin theta and sin square theta. So both are getting added, cos square theta sin square theta
So written as cos square theta plus sin square theta. Sin theta, cos theta, and positive and negative getting cancelled, 0. It is also 0, and it is sin square theta plus cos square theta. It also written as cos square theta plus sin square theta is equal to 1, and this is 0, 0, and its circle equal to 1. This is the simplified way of the given question. So in this type of question you are easily solved with the property of addition, but in case of addition we also remind that the order of the given matrix should be same. When the order of the given matrix should not be same, then addition is not possible. So this type of question you have easily solved, and there is no any problem with this. Some question you have obtaining values should be given, some question you have obtained value on the basis of this question, and this type of question is also present in your exercise book exercise. You are easily solve this question, and we should